Hello, everyone. A very good evening. I'm Dr. Himani Narula. I'm a developmental behavioral pediatrician, a co-founder and director at Continue Kids. And after a very long time, we are having this live session. And the topic is very interesting because when we talk of autism, we come across so many terminologies. Some people call it as autism spectrum disorder, some people call it as infantile autism, some say Kanner's autism, and then the parents come across Asperger syndrome and so many more different names for the disorder. And ultimately, it leads us to a confusion as to what is the actual diagnosis. Is my child having autism spectrum? Is it a social communication disorder? And all the terms that we read on internet like Kanner's autism, Asperger syndrome, high functioning autism, all these terminologies do end up confusing the parents as to what are these names referring to. Are they the same set of challenges, or they are a different set of diagnoses? So today we are going to talk about these set of names that we tend to read and hear about, so that we get more clarity and we can focus more on helping the child and be less confused about the various diagnostic labels that we have or we read across the literature. So it is very important to go back a little into the history to be able to understand where these names came into existence. So Mr. Leo Kanner was the first man who possessed that gift, and he was probably the first person to look into child psychiatry. And he was an Austrian born psychiatrist, studied at John Hopkins School of Medicine. And then from there, somewhere around in his middle 30s, he went on to practice. And then he came up with his first textbook of child psychiatry, uh, and from while collectively from his work at John Hopkins Medical Institute. And there he was the first one to publish a article on autistic disturbances of affective contact in 1943, somewhere around that old. And he coined the term infantile autism. So at that time, it was also called as Kanner's autism or infantile autism or childhood onset schizophrenia. So, a lot of symptoms between autism spectrum and schizophrenia appeared similar, but Kanner was the person who ultimately took that task of dividing them into two different disorders and find out their differences. And then it was termed that both autism and schizophrenia uh, both had a long-term outcome, but they are two different disorders. So he was the one. So that's how the story began, when Leo Kanner was the first person who coined the term, or who found or who wrote about autistic symptoms or autism spectrum. So that is why in early years, long back in those days, it was called as Kanner's autism or infantile autism or childhood onset schizophrenia, because symptoms of autism were somewhat similar to schizophrenia in adulthood. So that is how the term came into existence. Then gradually, as the time passed, with more and more people talking about it, then there was Mr. Jordan in 1999 also, who could figure out some criteria to diagnose a disorder as autism. And that's how the terminology started coming into existence. So it's important for us to know that Kanner's autism is a term which will now not be used separately, but it'll be a term which can be used for the same autism spectrum disorder that we call. And we will continue to go into the history and see how the terms got evolved, because there has been a revision of diagnostic criterias as the people went into seeing more children with these kinds of challenges,
as we went into studying more about these set of challenges, we came to talk about, we got to know about more uh, different types and variations in the spectrum. And that's how, from where we started considering other terminologies. So then the Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, many a times you'll find your developmental pediatrician or clinical psychologist or a child psychiatrist or a pediatric neurologist saying that the diagnosis is made as per the DSM-5 criteria. So when we say DSM, the DSM means the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. And initially, in 1980s, somewhere before that, it did not accept the diagnosis of autism until in the third edition, जो DSM का third edition था, which was published in 1980, Walmer and Lord in 1998. Again, American Psychiatry Association and Mr. Walmer and Lord, इन सब ने मिलके जो काम किया, then they published in DSM-3 um, the about autism. They started talking about autism. Initially, it was again called as infantile autism in the DSM third edition, revised version, जो 1987 में पब्लिश हुआ था. So DSM-3 जो आया था, उस मैनुअल के अंदर जो रिवाइज्ड वर्जन था, DSM-3 का रिवाइज्ड वर्जन था, उसके अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने ये टर्म लिखा और उसके कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज मेंशन किया एज टू व्हाट इज इन्फेंटाइल ऑटिज्म. ठीक है. सो फ्रॉम देयर ग्रेजुअली द क्राइटेरियाज गॉट मॉडिफाइड. DSM-4 आ गया जो 1994 में था. उसमें उन्होंने कोर सिम्टम्स के ऊपर एम्फसाइज किया कि सोशल कम्युनिकेशन डिले होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ difficulty or impairment in social interaction. There can be speech delay, there can be some ritualistic, stereotypic behaviors or patterns which are observed. And then gradually, जो DSM-4 बना था वो 1994 में था, and 2000 में DSM-4 got further modified and उसका एक revised version आया in 2000. So by the American Psychiatry Association. So then they again modified, edited the diagnostic criteria, and जो ऑटिज्म का फंडामेंटल सोशल रिटार्डेडनेस था या जो सोशल इंटरेक्शन में डिले था, उसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा हुआ. एंड उसके ऊपर आधारित उन्होंने 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट बनाए जिसमें सिम्टम्स का क्लस्टर आइडेंटिफाई किया. एंड फ्रॉम देयर देन DSM-4 या जो रिवाइज वर्जन था which was released in 2000 was followed. उसका जो criteria that was followed to make the diagnosis of autism. And then from there it got further modified, and then they came up with the DSM-5 criteria for diagnosis of autism. अब DSM-4 के अंदर जो diagnostic जो revised version था उसमें एक PDD-NOS था. PDD-NOS का मतलब होता है pervasive developmental disorder not otherwise specified. So ये हमारे DSM-3 से चला आ रहा है, और DSM-4 रिवाइज वर्जन में भी ये PDD-NOS करके था, जो कि बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ सोशल डिसफंक्शन होता है, और इसमें सिग्निफिकेंट स्पीच डिले और स्टीरियोटिपिक पैटर्न्स हो सकते हैं, बट इट डज नॉट क्लासिकली appear as autism. So it's when the diagnosis become confusing कि autism है कि नहीं है और सारे criteria justify नहीं होता था, तो वो pervasive developmental disorder not otherwise specified category में चला जाता है. So that was in there. And then there was another set of diagnoses जिसको हम Asperger's disorder बोलते हैं. So at the same time जब कैनर ने ऑटिज्म के बारे में बात किया था, एक और ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे जिनका नाम था हैंस एस्पर्जर्स. उनका नाम था हैंस एस्पर्जर्स. उन्होंने कुछ 4 बच्चों के केस सीरीज पब्लिश किए थे के अंदर they had said there is a definite amount of social impairment and but they had good language or communication language skills and very good cognitive abilities.
and it runs in family. So that kind of a case series उस समय Hans Asperger's ने publish की थी, which was not acknowledged at that time, but sometimes later on it got acknowledged. And then in DSM, जब हमारा DSM-4 TR version आया, 4 version आया, और फिर आगे उस diagnostic criteria को मॉडिफाई किया, तो उसके अंदर एक उन्होंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग से डाल दिया साइकियाट्री एसोसिएशन वालों ने, जिसके अंदर इसको हम बोलते हैं Asperger's disorder. अब Asperger's disorder में there's a significant impairment in social interaction, जैसे कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ब्लंटेड होना या मास्क टाइप होना, बॉडी पोस्चर्स, जेस्चरल कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं होना, पीयर इंटरैक्शन में कमी होना, मतलब अपने हम उम्र बच्चों के साथ बात करना या सोशल इंटरैक्शन करना उसमें थोड़ा सा डेफिसिट होना, और शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, शेयरिंग ऑफ एंजॉयमेंट, अचीवमेंट्स विद आवर पेरेंट्स, विद आवर peer, pointing at objects, or sharing something, oh, see, that's something very interesting. That kind of a sharing is lacking. Social emotional blunting होगा, मतलब emotional blunting is दूसरों के इमोशंस को ना समझना या अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं एंगेज कर पाना. सो ये सब तरीके के सोशल इम्पेयरमेंट्स पाए गए, बट और रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट बिहेवियर एक्टिविटीज, जो हम आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बोलते हैं, जैसे एक ही काम को एक ही ढंग से करना, बहुत पैटर्न में काम करना, जो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब हो जाना, एंजाइटी होना इफ द पैटर्न गेट्स डिस्टर्ब, बहुत रिचुअल्स फॉलो करना, फिजिकल मोटर में हैंड फ्लैपिंग, रेपिटेटिव बॉडी मूवमेंट्स, इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं, बट इनके अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस आर very well developed, matlab intelligence, problem solving abilities, cognitive functions are very highly developed. They can have some savant extraordinary cognitive function or ability. Along with these set of challenges, language impairment is less as compared to other areas. So high functioning autism or Asperger's can high functioning Asperger's में cognitive ability is above average. High intelligence levels is high, very high, along with social impairment, along with stereotypic repetitive patterns of interest, behavior and activities. Now ये सिलसिला अलग अलग तरीके के डायग्नोसिस का, पीडीडी, एनओएस, एस्पर्जर्स, ऑटिज्म, ये सब DSM-4 जो रिवाइज्ड वर्जन 2000 में रिलीज हुआ था, उसमें ये सारे अलग अलग एड्रेस्ड थे. दे हैड डिफरेंट कैटेगरीज and they were children were given diagnosis अलग अलग से, किसी को PDD मिलेगा, किसी को Asperger's मिलेगा, किसी को autism मिलेगा. But when they further worked on, जब उनका criteria, ऐसे ही एक DSM-4 में Rett's disorder हुआ करता था, जिसको हम और एक childhood disintegrative disorder होता था. तो Rett's syndrome is typically MECP जीन होता है, उससे रिलेटेड हो रहा है, गर्ल्स में कॉमन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं डायग्नोस्टिक, जिससे वो डायग्नोज किया जाता है और जेनेटिक टेस्ट से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर को पहले हेलर सिंड्रोम बोलते थे, जिसमें बहुत रिग्रेशन होता है माइलस्टोन्स का. सो ये सब तरह के अलग 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 नाम एग्जिस्ट करते थे. रेट्स और डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर जो थे, ये टिपिकली इनके हमें कारण पता थे, काफी इनके चैलेंजेस सिवियर फॉर्म के थे. तो ये दोनों डायग्नोसिस को बाद में फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सेपरेट किया गया. They were not included in autism spectrum, and as the diagnostic criteria modified further, the evolve हुआ diagnostic criteria, तो PDD, NOS, Asperger syndrome, ये सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूड हो गया. सो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम आज के डेट में फॉलो करते हैं, दैट DSM-5 क्राइटेरिया, जो आप देखेंगे कि जब भी डायग्नोसिस बनता है तो डॉक्टर्स विल मेंशन दैट वी हैव मेड द डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द DSM-5 क्राइटेरियाज. So those DSM-5 is the latest modified version of that diagnostic statistical manual. उसके अंदर ये criteria over a period of research, over a period of evidence
बेस मॉडिफाई किया गया बाय अ सेट ऑफ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, एंड उन्होंने मिलके ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया, और जो DSM-5 के मॉडिफिकेशंस हैं उसके अनुसार जो अलग अलग डायग्नोसिस थे ऑटिज्म के, जैसे एस्पर्जर्स हो गया, PDD-NOS हो गया, ये अलग अलग कैटेगराइज ना करके उन्होंने इन सबको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ ऑटिज्म, एस्पर्जर्स, PDD-NOS all put together, they have put it into a single spectrum of challenges, which is called as autism spectrum disorder. अब इन diagnostic criteria में क्या क्या आता है, हम we will talk about that so that you get clarity as to how a diagnosis is made and what is the importance of these criteria. हम इन criteria के आधार पर diagnosis बनाते हैं। जब ये criteria फुलफिल होते हैं तब हम बोलते हैं कि डायग्नोसिस इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, राइट। सो इसके अंदर क्या आता है, एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज है जिसमें सोशल और कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरैक्शन में इम्पेयरमेंट के ऊपर बेस्ड है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट ऑफ क्राइटेरियाज इन DSM-5 आर एक्सप्लेन द डिले और इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरैक्शन। और इसमें क्या क्या कवर होगा, एक तो डेफिसिट होगा इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोकल बिहेवियर, मतलब इसका मतलब है कि टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन करना, इंटरेस्ट शेयर करना, एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करना, सोशल रिएक्शन इनिशिएट करना, पीयर के साथ, दूसरे एडल्ट के साथ, कोई और पर्सन है उसके साथ एक इनिशिएट करना। इसमें वी ऑब्जर्व अ फेलियर इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोकल बिहेवियर। देन नॉन वर्बल, जैसे जेस्चरल कम्युनिकेशन करना, सोशल इंटरैक्शन में या कम्युनिकेट करने के लिए इशारों का इस्तेमाल करना, बॉडी लैंग्वेज को यूज करना, आई कांटेक्ट बनाना या पॉइंट करना एक उंगली से लेके कि मुझे ये चाहिए, या हमने कुछ दिखाया तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना, फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना, लाउड वाओ, वेरी गुड, एक्साइटेड होना, एंड दोज काइंड्स ऑफ जॉइंट अटेंशन देना, एक आंखों ही आंखों से जो हम कहते हैं इशारों से पता चल जाता है, दैट काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो इशारों से कम्युनिकेशन होता है, सोशल रेसिप्रोकल बिहेवियर होता है, उसमें डेफिसिट्स होना। ठीक है, सो देयर इज अ डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और थर्ड पॉइंट इज ए क्राइटेरिया में है डेफिसिट और मेंटेनिंग रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, child would find difficulty in adjusting behavior to suit various social context। अलग अलग सोशल सिनेरियोज में कैसे बिहेव करना है, घर में कैसे करना बिहेव, स्कूल में कैसे करना है, मार्केट प्लेस में कैसे करना है, ये डिफरेंशिएट करना, इमेजिनरी प्ले करना फ्रेंड्स के साथ में, टू और पीयर के साथ इंटरैक्ट करके इमेजिनरी प्ले करना, गेम्स खेलना। इस तरह के जो इम्पेयरमेंट होते हैं सोशल कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरैक्शन में, जो चैलेंजेस फेस करते हैं, परसिस्टेंट डेफिसिट्स नजर आते हैं, ये हमारे ए क्राइटेरिया को जस्टिफाई करते हैं। अगर हमें ये चैलेंजेस ऑब्जर्व होते हैं बच्चे में, तो दैट मीन्स देयर इज द ए क्राइटेरिया फॉर DSM-5 इज गेटिंग फुलफिल्ड। Now there are certain set of criteria, criteria in the B segment. B is restricted repetitive patterns of interest, behavior and activity. जो कोई इसमें 4 criteria होते हैं, इसमें कोई 2 भी अगर fulfill होते हैं तो they justify the diagnostic criteria। इसमें कुछ stereotypic repetitive physical movement हो सकती है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को एक ढंग से खेलना, जैसे स्पिन करते रहना, व्हील्स, कार के व्हील्स को गोल 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 घुमा के दिखना, खुद गोल 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 घूमना, हैंड फ्लैप करना। स्पीच में रिपीटेटिव हो सकता है, एक ही वर्ड को और एक ही फ्रेज को बार बार दोहराना, इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। बहुत फिक्स रूटीन होना, रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स होना, जैसे कि टॉयज को लाइनिंग अप कर दिया, लाइन डिस्टर्ब हुआ तो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रांजिशन लेना, एक गेम से दूसरे गेम में, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक घर से दूसरे घर में, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, बहुत रिचुअलिस्टिक पैटर्न फॉलो करना कि ये काम यही पर्सन के साथ करना है, ये यही के साथ करना है। अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और सेम रूट लेना है, रूट चेंज किया तो दिल गेट डिस्टर्ब, फूड सेम तरीके से सर्व होना चाहिए,
सेम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए. सो इनफ्लेक्सिबल अडेरेंस टू रूटीन, ये एक बी सेगमेंट में सेकंड क्राइटेरिया है. थर्ड है हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट. जो काम है वो उसमें बहुत एक्सेसिव फोकस होना, उसी को एक उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना, वही काम एक्सेसिवली करते जाना. और जैसे अगर ड्राइंग कर रहे हैं, कंप्यूटर का ड्राइंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स ड्रॉ करेंगे, दे वोंट ड्रॉ एनीथिंग एल्स. और इफ दे लाइक टू प्ले विद बॉल्स, दे वुड बी एक्सेसिवली obsessed with, sometimes they are obsessed with alphabets, numbers, or excessively restricted और fixated interest होना. और लास्ट फोर्थ क्राइटेरिया होता है हाइपर या हाइपो सेंसिटिव होना. जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ उस इंफॉर्मेशन को वो सही ढंग से परसीव नहीं कर पाते एनवायरनमेंट से. पेन को, टेम्परेचर को, या किसी तरह का स्मेल है, किसी तरह का टच है, कोई टेक्सचर है स्पेसिफिक, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई विजुअल सिनेरियो है. सो उसको हाइपर सेंसिटिव होना या हाइपो सेंसिटिव होना, हाइपो एक्टिव होना, रिएक्ट नहीं करना, उस तरह के चैलेंजेस अगर होते हैं, ये चार बी में चार क्राइटेरिया में से कोई दो भी अगर बच्चा फुलफिल करता है, तो दे फुलफिल द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, राइट. एंड अब हमने ये सिम्टम्स के बारे में जानकारी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये सिम्टम्स अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजेंट होने चाहिए. Typically start in the early years of life, and because जैसे social demands बढ़ेंगी, बच्चे की social requirements बढ़ेगी, socially उनको interact ज़्यादा करना पड़ेगा, ये symptoms enhance होंगे, and they'll start becoming more prominent as the child grows up in the initial years. But these इनका origin, इन challenges का origin early years में हो जाता है, somewhere less than 3 years में. Or symptoms, any symptom in neurodevelopmental disorders are not significant till until they cause some kind of social impairment, occupational impairment, और उनके फंक्शनिंग में, उनके एकेडमिक स्किल एक्विजिशन में, किसी भी फॉर्म में अगर वो बच्चे को इम्पेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो सिम्टम सिग्निफिकेंट नहीं है. इम्पेयरमेंट कॉज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी डायग्नोज. अच्छा, ये सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम इंटरफेयर कर रहे हैं बच्चे के लर्निंग में, उसके एक्टिविटी एक्विजिशन में, उसको सीखने में, उसके रोजमर्रा के सोशल स्किल्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको एकेडमिकली उसको बात करने में, कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. सो एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, जो पुराने जमाने में टर्म यूज होता था, ये सारे सिम्टम्स उसके कारण नहीं है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के कारण नहीं है. तभी आप ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनाते हैं. ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स जो हम जिसके बारे में बच्चे को असेस करते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प स्किल्स हो गया, सोशल एरिया, कम्युनिकेशन एरिया, कॉग्निटिव एरिया, सो सारे डेवलपमेंटल एरियाज विल बी रनिंग स्लो ऑन द सेम पेस. All of them will be delayed in global delay or in intellectual disability. Whereas in children on autism spectrum, there is a disproportionately excessive delay in their social and communication skills as compared to other developmental domains. उनके physical skills अच्छे develop होते हैं, self help skills भी better हो सकते हैं, their cognitive skills in most children can be better than the delay amount of delay they experience in their social and communication domains. So ये जो disparity है in their developmental skill set, that is also significant in making a diagnosis. So जब हमारी A to E सारे criteria justify होते हैं as per DSM-5, then we make the diagnosis of autism spectrum. And जो पुराना कैनर्स ऑटिज्म है, या इन्फेंटाइल ऑटिज्म है, या एस्पर्जर्स है, या हाई फंक्शनिंग है, they all are now termed and coined under the same big umbrella term of autism spectrum disorder. So spectrum is a word which tells us that it is over a whole spectrum of symptoms. Every child will have a different severity level. Every child can have a different set of more challenges and some unique abilities. It's a combination of different set of symptoms and skills.
Every child may not appear the same, every child may not have the same kind of prognosis, every child may not learn at the same pace, and in spectrum also children can have different capabilities and capacities. So that is why autism spectrum disorder is the term which is used as an umbrella which includes all these autism, Asperger's, and all these terms now. None of these terms are used outside spectrum disorder. So there's no further confusion. Diagnosis in today's times is made as per DSM-5 criteria, which I've just explained, and all the terms around autism, once they fulfill these criteria, they come in autism spectrum disorder. And there's no other term which is used in today's times in the latest scenario. So no confusion. Once the child fulfill these diagnostic criteria, fall in a diagnostic range, it's important for us again to not be focused at the diagnostic label of autism. It is more for our understanding as to how my child is going to learn, how I can help my child to learn and acquire new set of skills. It is more for the understanding of a professional like me or any other therapist who's going to work with the child to be able to help, support, understand the child, his or her needs, and be able to provide the right kind of intervention. That none of the diagnostic labels can ever define a child's capabilities and skills. So it is only and only for our better understanding of the child's needs and how we can help the child in a better way, and how we can help the child learn new set of skills. So that is all I believe from my side. And I hope our today's session helps you in better understanding of what are these terms like, how they were coined, and how we make a diagnosis based on the diagnostic criterias. And it relieves you of some confusion of the various terminologies which is being used. And I hope that today's session was useful. And with that, if you have any queries around autism, or if you have any um, comments that around this topic, you may post them in the chat box, and we'll be happy to answer. For more such informative sessions, you can reach out to our YouTube channel. We have plenty of videos around various topics to help and support parents better understand and work with their children. You can reach out, view those videos. If you have any comments, please help and put the comments for us to improve upon our sessions. If you have any specific topic that you want us to cover, you can place a request. We will speak on that topic for your better understanding. And that is all for today. Wish you all a very good night, and stay safe and healthy. Bye bye. So there's a question here in the chat box by Mr. Sujit Kumar. He's asking, generally autism with other disability found, how to identify. Okay. Autism can be associated with other form of neurodevelopmental disorders like ADHD. They can have intellectual disability also along with it. So the best way is to go for a detailed assessment. And when you do a detailed assessment, you are able to find out, as I explained, that if it is intellectual disability, then there is still a disproportionately significant delay in social and communication skills as compared to cognitive skills,
as compared to physical skills. So it's easier then to differentiate whether the primary diagnosis is autism or intellectual disability, right? So, and sometimes the autism can be secondary to some kind of a neurological disorder. So we look for certain neurocutaneous markers, or we look for some neurological symptoms. What is the birth history like? If we get cues from those kind of information that we collect from parents, based on that, we then plan certain investigations to find out if these set of autism symptoms are secondary to a cause, secondary to a neurological cause, secondary to probably birth trauma, or it's because of some secondary cause. Then we work up the child and try and find out a cause for it. But if you do not find any cause or any history which is in the child which is indicating us towards that kind of a diagnosis, then we really stick to minimal investigations and work more towards helping the child acquire skills through interventions. Okay. So, Sujit, if your child is throwing objects, that could be behavior, and he's small, 2 years old. I think some amount of a detailed assessment will really help first to find out what is the diagnosis, and make a good behavioral observation to understand the needs of the child, whether they are just simple, some regular behavioral problems, is there a social communication delay along with it, are there any repetitive behaviors which are observed. So ये सब का observation करना important है by a professional, do a assessment, how much the child is lacking behind in the skill set, and then figure out a plan कि हमें behaviorally आपको कुछ skills बताना है, behavioral intervention बताना है कि आप ये steps लीजिए when he throws, and work with the child and gradually reduce that unwanted behavior. एंड दी अदर मेथड इज कि अगर बहुत सारे डोमेन्स में डिले चल रहा है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अगर थ्रो करता है ऑब्जेक्ट को, इट्स इम्पोर्टेंट टू टीच चाइल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? So all those things are important. It's important to observe the child whenever we are thinking of a diagnosis of autism or ADHD. So yes, they can coexist. Autism and ADHD can coexist. Again, a thorough assessment is important so that you can treat it well. But for a child as young as 2 years old, we would consider intervening and also looking at a response to intervention, and then reevaluate the child. I think we don't have any more questions for today. You can put all the questions in the chat box, and yes, there can be metachromatic leukodystrophies which can have present with autistic symptoms. There you may have regression of symptoms, you may have other symptoms which will help us to make a diagnosis. Then you need to investigate thoroughly the child on those lines, especially if you have regression of symptoms, developmental milestones. Then it's important that you do a detailed uh, workup for the child to be able to make a diagnosis, the right diagnosis. So regression is one symptom that regression of milestone is one set of symptoms which should alarm us. So we would close our session for today. Wish you all good night and hope to see you again. Any further queries, you're please free to reach out to us at the contact details that we have shared. Thank you so much for being with us for today's session.